So, in our last class of human health and diseases, we have seen the vectors and the type of the vectors, biological vectors and mechanical vectors. These are the two types which we have seen. Now, today, what we have to see, and we've also seen the adaptations of parasites. Today, what we have to see is the effects of parasites on the host. Let us see what effect the parasite is having on the host. So, generally, the parasites cause weakening of the body, weakening of the host's body because of the deprivation of nutrients, obviously. So देखो कि लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि पैरासाइट होस्ट को मारता नहीं है, बट पैरासाइट ये होस्ट को वीकन कर देता है, उसके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है, उससे फूड और शेल्टर लेता है. तो जाहिर सी बात है कि जो फूड उससे ले रहा है, तो द होस्ट विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ फूड, एंड दैट्स द रीजन फॉर द weakness and deficiency of nutrients. Then they may also cause some pathological effects. Now, what are those pathological effects? Like parasitic castration. Okay, this we had seen in our last session. We are just continuing with that. So, root-headed barnacle. This is seen due to saculina, which is causing this disease in the crab. Then neoplasia. Neoplasia is now neo. The word neo is related over here. It's related to cancer, and plasia is tissue. So extra growth of tissue. Okay, extra growth of cancerous tissue. This is seen by some viruses in certain hosts. They will cause cancer. So there are some viruses which can actually, cancer is not a disease which can be caused by any pathogen, but it is induced or initiated by some viruses in some host. Basically, cancer क्या है? तो cancer is uncontrolled cell division. Okay, cancer is uncontrolled cell division, and uncontrolled cell division is caused by disturbance in the oncogene. राइट, oncogene एक जीन है जो आपके कहां पर रहता है. ऑन्कोजीन एक ऐसा जीन है जो आपके सेल में रहता है और सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ऑन्कोजीन ये आपके हर सेल में रहता है और वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उस ऑन्कोजीन को अगर डिस्टर्ब कर दे कोई भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस. नाउ सर, व्हाट इज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इज दैट व्हिच कॉजेस कैंसर. नाउ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कोई लिविंग सब्सटेंस भी हो सकता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस भी हो सकता है. इन दिस केस इट इज वायरस, एंड वायरस इज आल्सो ऑन द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो सूट हो सकता है. सूट मटेरियल मतलब जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं ना, कैम्फर या और कोई चीज लकड़ी बंद करने के बाद ब्लैक कलर के पार्टिकल्स उड़ते हैं, तो दे आर ऑल्सो कैंसरस. आप कॉर्न यानी कि भुट्टा आप रोस्ट करके खाते हो, उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स आते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक है. इसका मतलब ये नहीं कि एक बार खाओगे तो कैंसर हो जाएगा. राइट, सो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच आर carcinogenic. What are they? They are carcinogenic. Okay, and they disturb this oncogene, and when they disturb this oncogene, it leads to uncontrolled cell division, and that is called as cancer. Okay, so you can see this neoplasia, development of certain tissue. Okay, uncontrolled cell division of a tissue. ठीक है, तो सर वो कौन से सेल्स बनते हैं? हमारे सेल्स बनते हैं. हाँ, हमारे सेल्स ही बनते हैं, बट यू नो व्हाट कि हमारे बॉडी में भी इनफाइनाइट स्पेस थोड़ी है सेल्स के लिए. सेल्स भी होने चाहिए बट वो लिमिटेड होने चाहिए. इनफाइनाइट सेल्स अगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो स्पेस एंड देयर विल बी कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन. Up next is gigantism. Some parasites cause an abnormal increase in the size of the host, and this effect is called as gigantism. So the larval stages of Fasciola hepatica cause gigantism in snail. Yeah, let's see this. Right, original ये जो snail है उसका ये size है, वो कितना बन जाता है? बड़ा 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 होता जाता है. तो it shows gigantism. Right, Fasciola hepatica is showing gigantism in snail. So some parasites may increase the size of the host. Okay, then moving on to the next point, that is hyperplasia. Again, hyper meaning above and plasia meaning tissue. Okay, so some parasites cause increase in the number of host cells. This effect is called as hyperplasia. Cells को बढ़ावा देना, somewhat like neoplasia only. Okay, then Fasciola hepatica and the bile duct of sheep. So sheep के bile duct में क्या कर लेता है? ये हाइपरप्लासिया कॉज करता है. ना समथिंग दिस इज कॉल्ड एज जिंजिवल हाइपरप्लासिया. ये जो है ना, ये तो ये फैसियोला हेपाटिका तो शीप पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन और ऐसे कुछ
पैथोजेंस है जो ह्यूमंस में जिंजिवल हाइपरप्लासिया करते हैं। जिंजिवल मतलब क्या, गम्स, गम्स के ऊपर हाइपरप्लासिया, गम्स का ओवर ग्रोथ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि गम्स का क्या है, दिस ओवर ग्रोथ ऑफ द gums. You can see over here there is overgrowth of the gums. Okay, that is gingival hyperplasia. Okay, gingival hyperplasia. Then this is the gallbladder of the bile duct of the sheep. ठीक है, hyperplasia in bile duct of sheep. Then hypertrophy. Now some parasites cause an abnormal increase in the volume size of the infected host cells. So जब cells का volume बढ़ जाता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, hypertrophy. Hyper यानी कि over, above, excess, trophy is volume, kind of volume of the cell. So plasmodium vivax increases the volume or the size of the RBCs, क्योंकि RBC के अंदर रहता है, RBC के साथ में अंदर स्पोरोजोइट, मेरोजोइट, ट्रोफोजोइट, ये अलग अलग स्टेजेस है, लार्वल स्टेजेस है, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है हमारे RBCs और लीवर के अंदर में। वो हम लोग मलेरिया में इन डिटेल देखने वाले हैं। ओके, हियर इज the infected RBC. These are the normal RBCs. This is the infected RBCs. Size बढ़ा रहा है. Okay. Yeah, this is normal, others are normal, this is infected. Then some other diseases caused by the parasites. Now name of the diseases and causative agents. Now let us see, because we need to learn this neat perspective. I've yesterday also I told you African sleeping sickness is caused by Trypanosoma gambiense. Okay, then Delhi boils, Tashkent ulcers, or Oriental sores, they are the same thing, caused by Leishmania tropica. Leishmania donovani also causes leishmaniasis. Okay, Leishmania donovani, ये Leishmania tropica है, ठीक है। वैसे ही Leishmania donovani will cause leishmaniasis. Then काला आजार, डम डम फीवर, विसरल लेशमनियासिस is caused by Leishmania donovani, जैसे मैं बोल रहा था। So Leishmania donovani या leishmaniasis is also called as काला आजार और डम डम fever. Okay, then next is malaria. Malaria is caused by Plasmodium vivax. कल मैंने मलेरिया के आपको 4 causative agents बताए थे, मलेरिया, Plasmodium vivax, Plasmodium malarii, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. Okay, so malaria is caused by that, and malaria का जो falciparum वाला variant है, right, Plasmodium falciparum, that is the most dangerous. It can cause death also. Then Wuchereria bancrofti, ये किसकी वजह से होता है, एलिफेंटियासिस, मतलब एलिफेंटियासिस किसकी वजह से होता है, वुर्शेरिया बैंक्रॉफ्टी। नाउ एलिफेंटियासिस में मैंने आपको बताया कि देयर इज swelling of the foot or swelling of vulva or swelling of reproductive organs. Okay, genitals के भी reproduction expansion या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्या, elephantiasis में। और it is caused by Wuchereria bancrofti. It's also caused by Brugia malayi. Okay, Brugia malayi, spelling लिख के दूं क्या, Brugia, BRU, malayi, MALAYI. Yeah, so this is also another causative agent of filariasis. Filariasis का ही biological name है Wuchereria bancrofti, उसका और एक variant है Brugia malayi, which causes elephantiasis or filariasis. Okay, filariasis इसका alternative name है elephantiasis का. Okay, don't forget. So, and I hope you all are taking a lot of notes. Then answer these simple MCQs just to check whether you have understood. A crustacean acts as a parasite on another crustacean. This is what? Saculina. Okay, we have just seen Saculina acts on the crab. Then Kala Azar disease is caused by Leishmania donovani. We've just done that. Okay, then Trypanosoma gambiense causes the disease called as African sleeping sickness. सोते रहोगे, एंड उसका मैंने वेक्टर भी बताया था कल आपको। वेक्टर यानी कि उसका कैरियर कौन है, tsetse फ्लाई, tsetse फ्लाई इसका वेक्टर है, ठीक है। और मलेरिया का वेक्टर कौन है, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। देन क्यूलेक्स मस्कीटो किसका वेक्टर है, क्यूलेक्स मस्कीटो कल हम लोग ने किया था। हाँ, Wuchereria bancrofti का वेक्टर है कौन, क्यूलेक्स मस्कीटो इज द वेक्टर ऑफ Wuchereria bancrofti, दैट इज फिलारियासिस का वेक्टर। देन अब इसका वेक्टर कौन है, डेंगी वायरस का वेक्टर कौन, डेंगी इज अ वायरल डिजीज, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। तो डेंगी वायरस का वेक्टर कौन है, डेंगी वायरस का वेक्टर है एडिस इजिप्टी, कल देखा था हम लोग ने, एडिस इजिप्टी। स्पेलिंग चाहिए तो दोबारा लिख के देता हूं यहाँ पे, एडिस इजिप्टी।
Okay, right. Then come on, health and diseases पे आते हैं अभी. Now we are actually focusing on the health and diseases. चलो एक एक करके देखते हैं अभी health and diseases. So definition of health. Now what is the definition of health? It is a state of complete physical, mental and social well-being, and it's not merely absence of disease or absence of physical fitness. So it is a state of complete physical मतलब आपकी बॉडी के रिलेटेड, मेंटल यानी कोई मेंटल डिजीजेस होगी वो खुद के लिए भी हार्मफुल रहेगा या सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है. देन एंड सोशल वेलबींग, राइट. सोशल वेलबींग भी, सी ह्यूमन इज अ कॉन्ग्रीगेशनल एनिमल. ओके, एंड keeping socially well, okay, is also a part of health. Okay, so this is the definition of health. Now let us see what is contributing to your health. So a balanced diet is contributing to your health, and a regular exercise is contributing to your health. Then also personal hygiene, okay, personal hygiene is also contributing to your health. Then right attitude of mind, the right mindset will also contribute to your health. You know, कुछ unnecessarily झगड़े करना, unnecessarily tantrums करना, ये आपको क्या करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा. खैर ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, उसके ऊपर अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, दैट इज ऑन साइकोलॉजी. Okay, then good habits. Okay, so this all these things will contribute to your health, right. Then here we are having good humor hypothesis. The theory was asserted by early Greeks like Hippocrates, as well as the Indian Ayurvedic system of medicine. Now it was thought that persons with black bile belong to hot personality and would have fevers. William Harvey, this was an early prediction. Then the discovery of the circulation of blood by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature using thermometer. Persons with black bile disproved the good humor hypothesis. So ये पुराने hypothesis. Then according to good humor hypothesis, health was considered as a state of mind and body where there was balanced of certain humors, right? So now health affecting factors. Let us see one by one health affecting factors. Now your health is affected by infections, genetic disorders and your lifestyle. ठीक है, हेल्थ किससे अफेक्टेड होगी, इन्फेक्शन से. अगर आप कोई पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या और कोई पैथोजन के कांटेक्ट में आते हो, एंटीजन के कांटेक्ट में आते हो, तो वो इन्फेक्शन हो गया आपके लिए, तो आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है. लाइक व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट 2 years, दैट इज अबाउट कोविड, द कोविड फेज. इट वाज बिकॉज ऑफ अ वायरस. दैट वायरस लिटरली डिस्टर्ब्ड आवर हेल्थ. Okay, not only our health, it disturbed our lifestyle also. Where तो इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस की वजह से आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है. फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर जनरली कॉन्जेनाइटल. कॉन्जेनाइटल मतलब दे आर प्रेजेंट सिंस योर बर्थ. जैसे कि we can say color blindness, then hemophilia. All these are genetic disorders. Okay, then if you talk about lifestyle, now lifestyle can also deteriorate your health if it's not in the right way, like smoking, consuming alcohol, right, and nicotine, drugs. अदर चीज आपकी जो लाइफस्टाइल, अगर आप मतलब नो एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, or you can say some people are addicted to eating also. Okay, overeating of lipidic products, becoming obese, cholesterol level increase hona, because this happens because of your lifestyle. Okay, so then yeah, this is what I have just explained. Then here now these three things will control your health. Then how does your healthy habits help? Now reduces infant and maternal mortality. Now अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, स्पेशली फीमेल्स की, तो इट विल रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टलिटी. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, जान जान है तो जहान है, राइट. सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका टाइम प्रोडक्टिवली आप यूज कर पाओगे. लॉन्जिविटी ऑफ पीपल, पीपल कैन लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड मोर एफिशिएंट एट वर्क. Okay, so this is how you can your healthy life will support you in these ways. Then
health gaining measures, now maintenance of hygienic food and clean water resources. Now आपको सबसे पहले जैसे इन्फेक्शियस था ना, इन्फेक्शंस थे, तो इन्फेक्शंस को अवॉइड कैसे, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आते कैसे, एक तो वेक्टर से आते हैं या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आते हैं। तो वेक्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, नेट्स है, या पेस्टिसाइड कंट्रोल है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू कीप योर सेल्फ हेल्दी। देन इफ यू हैव, ऑब्वियसली यू शुड नॉट ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप बहुत जी ललचाता है आपका पानी पूरी खाने के लिए, बट पानी पूरी में अगर वो पूरा उसके पांचों उंगली दसों उंगली डुबा के उसको आपको खिला रहा है, देन ऑब्वियसली देर आर चांसेस ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर टू एंटर योर बॉडी। Proper disposal of biological waste. Now let that be the menstrual waste, or let that be your fecal matter, let that be urine, let that be any biological waste. If that is not disposed properly, then it may lead to diseases. That's why we have a proper drainage system, a septic tank and all that. Okay, then vaccinations. Now vaccinations will also contribute to your health. ओके, सो अभी आपने वैक्सीन के बारे में बहुत सुना है रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोविड, बट इसके पहले भी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक 3 इयर्स का रेजिम रहता है उसके लिए। ठीक है, एन नंबर ऑफ वैक्सीन उसके लिए रहते हैं, सो दैट दैट चाइल्ड गेट्स इम्यूनिटी। देन पर्सनल हाइजीन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये अभी मेरे को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं आपको। देन रेगुलर एक्सरसाइजेस, बैलेंस डाइट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, as I've told you in beginning. Now one of the health affecting factors is, yeah, it's basically all of the above. Yeah, lifestyle, but lifestyle में ये सब आता है ऐसा मेरे को लगता है। Then next one of the health gaining measures is regular exercise. Now types of diseases. Now let us focus on, अभी health के बारे में देख लिया, अभी diseases के बारे में देखते हैं। Now what is a disease? Okay, any change from the normal state of health that causes discomfort or disability is called disease. Okay, it's the opposite of types of disease. Generally disease जो है ये इन्फेक्शंस की वजह से होता है या वेक्टर्स पैथोजेंस की वजह से होता है, एंड डिसऑर्डर्स जो है, डिसऑर्डर्स इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या कोई फिजिकल आपकी बॉडी में गड़बड़ हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, या फिर हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए, सो दैट विल कम अंडर डिसऑर्डर। सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ना इन्फेक्शियस मतलब अभी आपने रिसेंटली जो देखा कोविड, इट वुड बी कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब फ्रॉम, इट वुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, so these are infectious diseases. And non-infectious diseases, meaning which are not non-communicable, they cannot be transferred from one person to the other person. Okay, just by simple physical contact they will not be transferred from one person to the other person, will come under non-infectious. तो infectious में देखो कौन कौन से हैं। Now easily transmitted from one person to another person, that's called as communicable disease caused by pathogens, very common and suffered by everyone from any of the diseases at some time or the other. Now you can say amoebic dysentery, malaria, elephantiasis, typhoid, pneumonia, common cold, ringworm, all these are इन्फेक्शियस डिजीजेस। रिंगवर्म एक फंगल डिजीज है। ओके, रिंगवर्म आपको, इट्स अ मिसनॉमर, ये कोई वर्म से नहीं होता है, उसका जो शेप है वो जो आपके बॉडी पे आता है वो वर्म जैसा आता है, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज रिंगवर्म, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ वर्म। ओके, एक्चुअली इट इज नॉट अ वर्म, वर्म नहीं है वो, क्या है? Yes, ringworm is not a worm. What it is? It is a fungus. Which fungus? It is ट्राइकोमोनास, राइट, ट्राइकोमोनास ये फंगस का नाम है। ठीक है, और भी फंगस है, फंगाई है जो रिंग वर्म इन्फेक्शन कॉज करते हैं, राइट। देन कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, इट्स अगेन अ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। विच वायरस? या कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय विच वायरस? Hemophilus influenza or Hemophilus influenzae. Then typhoid is also caused by a bacteria. Okay, pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae. Salmonella typhi causes typhoid. Malaria is caused by the protozoa, Plasmodium vivax, falciparum, malarian oval. Elephantiasis caused by, yeah, the filarial worm. Which is the filarial worm? बोला था मैंने आपको, बुर्शेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड ब्रुजिया मलाई। अमीबिक डिसेंट्री ऑब्वियसली कॉज्ड बाय अमीबा। और ये सारे क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान
तक जा सकते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि दे आर नॉट कम्युनिकेबल, दे आर नॉट इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस, दे आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। एग्जाम्पल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो obviously it is not caused by one person from, it will not be transmitted. There is a problem in your DNA, there is a problem in the gene, there is a problem in the copying of DNA, there are aberrations, there is malfunction in the copying, and that's why there is it is generated in a genetic disorder. ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था मे बी वहां पे गड़बड़ हुई है, तो इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे मैंने बोला हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, okay, then color blindness is a genetic disorder, okay, then kidney problems एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर नहीं। आगे किसी को किडनी स्टोन हो गया, आपने उसको हाथ लगाया, आपको भी किडनी स्टोन होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन, इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड लेस कंजम्पशन ऑफ वाटर। इसके लिए बॉडी में कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सैलेट। Then heart problems is also non-communicable diseases, not transferable diseases. Then here we are having common parasitic causing diseases. Such diseases causing forms are called as pathogens, okay, a wide range of forms that belong to protozoans helminthes। protozoans आपको पता है, जैसे कि मलेरिया is caused by protozoans, then helminthes मतलब worms, bacteria, fungi, viruses could cause diseases in man। और ये भी मैं आपको बता दूं कि these diseases are species specific। species specific मतलब क्या? इसका virulent factor जो है वो species specific है। इसका virulent factor ये अगर आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो वो आप ही को मतलब ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि कोविड अगर हो रहा था वो सिर्फ ह्यूमंस में हो रहा था, डॉग्स में थोड़ी हो रहा था, राइट? डॉग्स में, कैट्स में, उनमें कोविड हो ही नहीं सकता क्योंकि उनका जो डीएनए है उसको विरुलेंट फैक्टर अटैक नहीं करता, इनका विरुलेंट फैक्टर अटैक नहीं करता। विरुलेंट फैक्टर इज द डिजीज कॉजिंग फैक्टर। सो विरुलेंट फैक्टर इज स्पीशीज स्पेसिफिक। जो डिजीज डॉग्स को होते हैं वो आपको नहीं होते, जो आपको होते हैं वो उनको नहीं होते, जो प्लांट्स को डिजीज होते हैं वो आपको नहीं होते, जो आपको डिजीज होते हैं वो प्लांट्स को नहीं होते, राइट? द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, multiply and interfere normal activities resulting in morphological and physiological damage, okay? So the pathogens can enter through which from how they can enter our body? Through contaminated food and water, through your nose by inhalation of impure air, then through your ears, through your skin, if your skin is damaged और अगर आपको कुछ लग गया है, राइट, तो वहां से भी एंटर कर सकते हैं। देन माउथ से जो तो मैंने बताई थी आपको। देन फीको ओरल रूट तो कभी कभी एनल रूट से भी एंटर कर सकते हैं जहां पे पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, तो एनल रूट से भी कुछ यू कैन से लाइक कौन सा कल हम लोग ने देखा था, एस्कैरस या एस्कैरियासिस, राइट? सो एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय विच वर्म? Ascaris worm, okay, ascariasis is caused by the ascaris worm, it is biological name है उसका ascaris lumbricoids, okay, ascaris lumbricoids cause करता है। तो वो एंटर कैसे करता है? पूरा वर्म नहीं एंटर करता है, उसका लार्वे या एग एंटर करता है, मे बी थ्रू द ओरल रूट और थ्रू द फीकल रूट यानी कि एनल रूट, ठीक है? तो अलग अलग जितने भी ओपनिंग्स है हमारी बॉडी में, उस सारे ओपनिंग से ये पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। बट उधर भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है, म्यूकस लेयर्स वगैरह है, बट फिर भी दे कैन एंटर, okay, then resulting in morphological and physiological damage. So that is a parasite, okay? So parasites and pathogens of man एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हम लोग काफी बात कर चुके हैं इनके बारे में, वुर्शेरिया बैंक्रॉफ्टी। देन डैश मलेरिया इज एन डैश डिजीज, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट्स नॉट कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब प्रेजेंट सिंस बर्थ। इज इट नॉन इन्फेक्शियस? नो, इट इज इन्फेक्शियस। वाटर कंटामिनेटेड डिजीज, यस, ऑकर्स बिकॉज ऑफ वाटर, बट यहाँ पे हम लोग इन्फेक्शियस में जाएंगे। इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीज कॉजिंग फॉर्म्स are called, they called as pathogens, right? Let's see the next ppt now. So now we will discuss about, specially about Entamoeba histolytica.
एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? डायरिया करता है। अमीबा है, अमीबल डिजीज है, अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं इसको, राइट। सो एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है, तो वह से शुरुआत करेंगे, उसका लाइफ साइकिल देखेंगे आपकी बॉडी में, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली। डू यू नो द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द फेमस मुगल एम्परर अकबर एंड द मोस्ट फेमस तेलुगु किंग श्री कृष्ण देवराया? ओके, सो ये इनकी डेथ हुई थी सिंपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका। उस टाइम पे ये सिंपल नहीं था उतना, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री, आज हमारे पास अलग अलग मेडिसिन है इसको क्योर करने के लिए, बट उस टाइम पे उस जमाने में इतने मेडिसिन नहीं थे कि हम लोग इसको क्योर पर कर पाए, और इसके लिए दीज किंग्स एंड मेनी अदर पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो अब जाके बढ़ी है, लेकिन अगर आप इफ यू गो बैक 100 years अगो, राइट, तो 100 years अगो 1920s के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 30 years। ओके, 30 to 32 years was the life expectancy। 30 to 32 years की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ज्यादा नहीं। मतलब जो इंसान 30-32 साल जी लिया, मतलब काफी जी लिया, उसके बाद में वो मर भी सकता है, राइट। एंड कुछ ना कुछ डिजीज एनकाउंटर कर लेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो ऐसा नहीं कि सब 32 पे आके मरते ही थे, 60, 70, 80, 90, 100 तक भी जीते थे जीने वाले, बट कुछ लोग पहले ही मर जाते थे। तो लाइफ एवरेज लाइफ स्पैन जो था वो बहुत कम हो गया था बिकॉज ऑफ द वेरियस एनकाउंटर्स। जब फिर उसके बाद में जब एंटीबायोटिक और मेडिसिन का एरा आया और हमारा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी बढ़ते बढ़ते इंप्रूव होते होते आज द नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज रीच्ड 75-80, राइट, इस लेवल में पहुंच गया बिकॉज ऑफ द वेरी ग्रेट हेल्थ फैसिलिटी विच वी आर हैविंग। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसका फाइलम कौन सा है? इट्स अ प्रोटोजुअल amoeba comes under protozoa. Then subphylum Sarcomastigophora and class is Rhizopoda. Then you can see the group Entos with Amebo, मतलब एंटोस का मीनिंग है विद इन, एंटोस का मीनिंग ये भी है विद इन द इंटेस्टाइन, एंटरॉन एंटोस। देन एंटामीबा कैसे वर्ड आया वो बता रहे हैं। अमीब मतलब चेंज एंड हिस्टो मतलब टिश्यूज, लाइसिस मतलब डिजोल्व। तो टिश्यूज को डिजोल्व करता है, कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन में जो टिश्यूज है वहां पे डिजोल्व करके उनको डिसेंट्री यानी कि डायरिया शुरू कर देता है। सो इट इज अ हिस्टोजोइक मोनोजेनेटिक एंड माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एंटामीबा इज अ हिस्टोजोइक मोनोजेनेटिक and microscopic parasite. Entamoeba inhabits the large intestine and causes amoebiasis, amoebic dysentery in man. Okay, the mode of infection through contaminated food and drinking water. Houseflies, cockroaches, etc. act as mechanical vectors. Okay, then it is cosmopolitan in distribution but more common in the tropical and subtropical regions of the world. See, tropical region एक ऐसा region है जहां पे सबसे ज्यादा पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? जहां पे 8 मंथ्स का रेनफॉल है, ठीक है, 8 मंथ्स का रेनफॉल है, थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज है, इतने ट्रीज है कि सनलाइट इज बैरली रीचिंग द ग्राउंड। तो ऐसा डार्क हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ग्रो होते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज अ ट्रॉपिकल डिसीज। एंड इट इज कॉमन इन द पीपल ऑफ रूरल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर द हाइजीन इज एन इशू, देयर इज पुअर हाइजीन। Okay, then here stages Entamoeba histolytica in its life cycle. There we are having Trophozoite stage, then pre-cystic stage, cystic stage. These are the three stages. Now in Trophozoite stage, you can quickly see it is forming a pseudopodium, that is its foot, you can say a false foot. Then it is the most active motile feeding and pathogenic stage that lives in the mucosa and submucosa of the large intestine. Okay, so this is the Trophozoite stage. Then it moves with the help of a lobopodium or pseudopodium. Then it is surrounded by plasma lemma, and its cytoplasm is differentiated into outer clear viscous non-granular ectoplasm and the inner fluid like granular endoplasm. तो ये इन शॉर्ट इसका ट्रोफोजोइट के डिटेल्स है, ठीक है। उतना डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब फॉर योर बोर्ड एग्जाम यू डी नॉट गो दैट मच इन डिटेल। अगर आपको नीट के लिए है तो एक बार सिर्फ गो थ्रू दिस, ओके, उतना बाकी डिटेल्स हम लोग को उतनी ज्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है। अभी प्री सिस्टिक स्टेज मतलब सिस्ट के पहले, इट इज द नॉन फीडिंग एंड नॉन पैथोजेनिक स्टेज ऑफ एंटामीबा। इट इज फाउंड इन द ल्यूमेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन and it is small spherical oval non-motile form. Cytoplasm stores glycogen granules and chromatoid bars, ribonucleic protein which acts as reserve food for the
अमीबा। अब सिस्टिक स्टेज, प्री सिस्टिक स्टेज में वो सब स्टोर कर लिया उसने, इकट्ठा कर लिया, फूड मटेरियल इकट्ठा कर लिया। अब बाद में जब सिस्टिक स्टेज में सिस्ट फॉर्म कर लेगा तो बाहर के कांटेक्ट से, एनवायरनमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका, अंदर ही अंदर खुद का रिजर्व फूड मटेरियल यूज करके वो सर्वाइव करेगा। क्यों? because in the cystic stage it is entering through your oral route से भी वो एंटर कर सकता है, और वहां पे एसिड भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक डेड लेयर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्ट। द सिस्ट वॉल विल रेजिस्ट ऑल काइंड ऑफ इनफेवरेबल एनवायरमेंट। इट इज फाउंड इन द lumen of large intestine. The process of development of cyst wall is called as encystation. Now encystation is helpful to tide over unfavorable conditions that the parasite is going to encounter while passing to a new host. Okay, so ये उसके stages है cyst form करने के। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये सब होने के बाद में इट इज गोइंग टू कॉज व्हाट, इट इज गोइंग टू कॉज डायरिया और डिसेंट्री। देन एंटामीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास, does it belong to insecta? Not at all. Not at arthropoda? Not at all. Pericyclopoda or rhizopoda? It belongs to rhizopoda. Then pathogenic state of Entamoeba histolytica is the trophozoite stage. Then Entamoeba histolytica mitochondria is absent as it is an obligatory parasite. ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका।